Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. The most important news and editorial of the day that is relevant for both prelims and mains examination perspective will be discussed in this session. Let's get started with the news topic list. Today is 6th of September. The first news, that is preventive detention rate, has taken a toll for 2021. We'll see the detail about this. Second, Supreme Court notice on plea by Ukraine return medical student. Third, service PMI flags rebound in August. Fourth, GMO meat views diverge on the tax valuation mechanism. And the last is an editorial from the Hindu, that is the funding of public educations. Apart from the news and editorial discussion, at the end of this video, there will be MCQ based questions, and these questions will be based on current affairs that will help you for the upcoming prelims examination. So without any further delay, let's get started. And before that, if you're new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful for your examination purposes, do not forget to press a like button. So starting the session, the first news, that is preventive detention rose in 2021. Something important for General Studies paper 2 under the topic, that is government policies and intervention for the development of various sectors and issues arising from its design and implementations. So according to the latest data, which was released by the NCRB, so known as National Crime Record Bureau, उन्होंने कुछ डेटा रिलीज किए जिसमें प्रिवेंशन डिटेंशन के बारे में बात की गई है, which has seen a toll of 23.7% compared to the previous year data. So this number is again significant and important. This is 23.7%, right? Now, as per the NCRB data, over 1.1 lakh people are being placed under the preventive detentions, and the number of the person placed under the preventive detention has also seen a toll in 2021. So there has been an increasing trend, which was officially reported and forecasted by the NCRB in its latest statistics. Now, details of detainee की अगर बात करें, जो लोग डिटेन किए गए हैं उनके bifurcations कौन कौन से लोग किस कैटेगरीज में डिटेन हुए हैं. सो अ टोटल ऑफ 483 people were detained under the National Security Act, जो NSA Act होती है. दिस इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, राइट. तो यहाँ पे NSA के अंदर 483 लोग को डिटेन किया गया, विच इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दैट. 241 were either in custody or still detained till 2028. And approximately, this is close to 24,500 people were placed under the preventive detention, were either in the custody or still detained as of 2021. At the end, this is highest, right? 2017 से कंपेयर करें तो ये नंबर काफ़ी ज़्यादा, comparatively 2017 से काफ़ी ज़्यादा है. Now, in comparison to the data that was released by NCRB for 2017, it says that the crime in India reported was found that 67,084 person has been detained as a preventive measures that year, right? This is for 70, and out of which 48,815 were released between 1 and 6 months of the detainees, and 18,000 approximately in custody preventive detention at the end of this year. See, this is the news which is a number and data driven. While we are discussing, we need to understand the trend. इस तरह के न्यूज़ में आपको ट्रेंड समझना ज़रूरी है कि क्या फॉलो हो रही है, कितने लोग डिटेंड हो रहे हैं, किस तरह से कन्विक्शन रेट है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अभी भी गवर्नमेंट ने दिल्ली पुलिस की अगर बात करें, दे हैव सेंड, होम मिनिस्टर ने कहा कि जो हमारी डिटेंशंस रेट है या खास करके जो कन्विक्शंस रेट है उसे बढ़ाने की ज़रूरत है. तो उस ट्रेंड में अगर मेंस में क्वेश्चन पूछे गए तो आप इस तरह के डेटा जो NCRB एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है उनके डेटा को यूज़ कर पाएंगे. दैट इज़ द रीज़न वी आर डिस्कसिंग दिस न्यूज़, बट यू डोंट नीड टू गेट इनटू दैट नंबर्स. आपको ये नंबर्स नहीं याद करना, बट ट्रेंड पता होनी चाहिए. Now, the number of person placed under the detention has been increased since 2017, over 98,700 in 2018, उसके बाद 1.06 लाख, और ये नंबर अकॉर्डिंगली फिर डिप हुई है 89,405 पे.
The preventive detention under the NSA, that is the National Security Act, has increased to 741 in 2020. उसके बाद इस नंबर में डिक्रीज देखेंगे, ये डिप है, दैट इज 483 फॉर 2021. दिस इज द डेटा विच इज देयर इन द हिंदू इटसेल्फ. तो यहाँ पे कुछ ग्राफ के थ्रू बताने की कोशिश की गई है दैट द रेड इन कलर इज फॉर द डिटेंशंस एंड blue in color is for the release. So you can comparison the data for 2017. Like the detainee was 501 and released was 229. Again in 2018, 697. This is data. We'll look into the current one, that is for 2021. 483 were detained and 242 were released. So this is a data that was released, and most of them, that these data is with regards to the NSA, that is the National Security Act for the past 5 years. Now there's a specific section in the CRPC, that is Code of Criminal Procedures. So section 151 क्या है, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है. This is important for the prelims examination. So it's this particular section, the police are empowered to make a preventive arrest. अगर किसी को लगता है कि ये एक इंडिविजुअल किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को खतरा पहुंचा जाया जा सकता है उसके इंडिविजुअल के थ्रू, तो उसको एज अ प्रिवेंशन अरेस्ट की जा सकती है. सो दैट अरेस्ट ऑन अ प्री अजम्पशंस दैट ही कैन डिस्टर्ब द लॉ एंड ऑर्डर इज नोन एज अ प्रिवेंटिव अरेस्ट, राइट. तो ये प्रोसीजर्स ऑलरेडी हैं सेक्शन 151 ऑफ सीआरपीसी में, राइट. सो इट सेज दैट empower the police to make a preventive arrest if they believe that they must do so to prevent the commission of any cognizable offense, and the detention can be extended beyond 24 hours. So these are again factual knowledge that you must know. And under any other provision of this code of the law, these are some of the provisions that is enshrined in the CRPC of Indian Constitution. Basically अगर criminal procedures code की बात करें उसके अंदर. Now, Supreme Court notice on the plea by Ukraine returned medical student. This medical student had been stranded for long, almost close to 5 months from the onset of the war. The student has not been given the clarity by the government of India. So this particular news is important for General Studies paper 2, that is the issues related to development and management of education as well as human resources. So recently the Supreme Court of India has issued a notice on a petition that was filed by the Indian student who fled from Ukraine after the Russia's invasion in February, right, seeking to continue their medical education in Indian college itself, right. तो अपील फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और ये बोला गया है कि जो ऐसे बच्चे हैं जो यूक्रेन से वापस आए इंडिया बिकॉज ऑफ द वॉर, दे शुड कंटिन्यू द स्टडी इन इंडियन यूनिवर्सिटीज ओनली. Now in March, the Indian government has evacuated a large number of students who were trapped in the Eastern European countries. तो कई लोगों को यूक्रेन के अलावा दूसरे कंट्रीज में जंक्चर्स ले लेके बेसिकली दे वर बीइंग ड्रॉप डाउन, और उसके बाद उनको इंडिया लाया गया. Now looking into the students community in Ukraine, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट है that is from India. यूक्रेन में अगर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पॉपुलेशन की बात करें फॉरेन स्टूडेंट में, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, सो इंडिया हैज़ द नंबर विच इज़ 22.9%. उसके बाद जो नंबर आती है जिस कंट्री की, दैट इज़ मोरक्को, देन अल्जेरियान, तुर्कमेनिस्तान, नाइजीरिया, टर्की, चाइना, इजिप्ट, इजराइल एंड यूपेकिस्तान, राइट. तो ये कंट्रीज़ के कुछ लोग हैं जिसमें इंडिया इज़ ऑन दैट वन. ना हाफ ऑफ देम आर स्टडीइंग मेडिकल. अगर बात करें टोटल जो इंडिया के बच्चे हैं उसमें 32.4% जो बच्चे हैं दैट इज स्टडिंग मेडिसिन, राइट. उसके अलावा 7.7% मेडिकल प्रैक्टिस, 6.3 इज ऑन द डेंटिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में 3.1 और अदर रिसोर्सेज में 50.5. तो दिस नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज this is the reason the Supreme Court has also asked the central government to intervene and give the clarity that what these students will be benefited, how the government of India is going to look into this matter, right. Now government ki kya stand hai? The center has informed the Supreme Court that the Ministry of External Affairs have taken a favorable view towards allowing the student who have fled from the Ukraine due to the war, and they will definitely continue their studies. This is what the government has told, but a consultation has to be established by the Ministry of
हेल्थ अफेयर्स, खास करके अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की बात करें, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की, उससे कंसल्टेशन की जाएगी, क्या रोड मैप निकल सकती है, किस तरह के एक सॉल्यूशंस दिए जा सकते हैं बच्चों को, उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने स्टैंड क्लियर किए. The government has sought the time to consult the health ministry also. They said that we need some time to consult with the health ministry also. Now, लोकसभा में एक कमेटी थी एक्सटर्नल अफेयर्स की, जिन्होंने ये बात कही, जिसको लेकर के पिटिशन फाइल की गई है. बेसिकली दिस वाज द ग्राउंड अपॉन विच द पिटिशन वाज फाइल्ड. The petitioner has relied on the report that was by the Lok Sabha Committee on External Affairs to butters this case. In this report, the committee has recommended that Health Ministry to consider accommodating this student in private medical colleges in India as one time measures. तो one time measures के तौर पे, क्योंकि ये war जो हुई है, that student has no role to play on that, right? This is something, a kind of a calamity that student is facing on their studies, on their career. So one time compensation के तौर पे इन बच्चों को एडमिशन दिया जा सकता है, राइट. एंड दीज ऑल स्टूडेंट हैव क्वालिफाइड नीट एग्जामिनेशन. जो नीट के एग्जाम्स होती है, वो बच्चों ने सब नीट के एग्जाम्स क्वालिफाइड है, बट उनके रैंकिंग नहीं होने की वजह से मोस्ट ऑफ देम हैव टेकन स्टूडेंट टू द आउट स्टेशन, खास करके इंटरनेशनल, यूक्रेन जैसे कंट्रीज में. Now, demand by petitioner, the petitioner has approached the court to intervene on the behalf that the government and the national medical commissions, इन दोनों के intervention की बात की गई है. However, the court in this previous hearing issuing the notice has said that the petitioner law on the route of the tough questions, बहुत सारे important basically hearing भी हुए इसको लेकर के, but अभी तक कोई conclusion नहीं निकली है. The court has earlier issued notice to the government on the batch of the 7 read petition that is seeking nearly 20,000 students who have returned from the Ukraine, right? And a senior lawyer has submitted that the central has the power to help student under the National Medical Commission Act. तो lawyers का कहना है कि जो NMCA है, National Medical Commission Act है, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो ऐसे बच्चों को एडमिशन दे सकते हैं. Now, the other news, that is service PMI flag rebound in August, something relevant for General Studies Paper 3 under the topic Indian Economy and Issues Related to Planning, Mobilization, Resource Growth and Development. So, according to S&P Global India, इन्होंने कहा कि जो Purchasing Manager Index है for the service sector has rebound, right? This has rebound for August, a 4-month low जब देखी गई थी, basically जुलाई में भी low देखी गई थी. Now, this is rebounding, and this is again a positive signs that the economy is recovering. This sign is something evident of the fact that yes, to the larger extent, जो खास करके PMI के सेक्टर, जो सर्विसेज सेक्टर है, वो rebound करी. The sector has created the most job in 14 years to import cost pressures and eased slowed in the 11 months. तो comparatively अगर आप देखें post economy recovery जिस टाइम से हो रही है कोविड की, उसके बाद से ये सबसे हाई नंबर रिपोर्ट किए गए. The PMI has expanded to 57.2 last month compared to July में 55.5. While overall increased have the service sector has sharply seen from July. अगर बात करें कुछ important sectors की, like transport, information and communication technology have the farther spurt of the businesses and the output, with finance and insurance operating in the subsector. So these sectors comparatively are performing well and giving the positive sentiments to the economy. Now, inflation is again, which is evident of the fact that is another tool. So the consumer service faced the highest number of the cost inflations, right? And transportation, information and communication service recorded the fast rise in the selling prices. While demand showing considerable resilience, अगर बात करें service providers की, maintain the degree of pricing power that has lifted the selling price amid the transfer of the cost increase to the customers, right? तो ultimately अगर prices बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं वो cost burden जो है वो customers के end में जाती है, consumer के end में जाती है. Now, outstanding business volumes rose at the fastest pace of the 18 month in August, taking the sequence of accumulating to the 8 months. Now, अगर बात करें Composite Index की, this is again climb. The manufacturing PMI reflections are strong growth in the order to have orders and output. और the composite PMI output की बात करें, it has taken a rose to 58.2% from 56.6. And the rate of inflation faced by manufacturing and services firm has combined hit 19-month low.
The other news, GOM meets views divergent on the tax valuation mechanism. Something this is relevant for General Studies paper 3 under the topic Indian economy and issues related to planning, mobilization, resource growth and development. So, 8 ministerial जो panel है, which is headed by the Meghalaya Chief Minister, is expected to finalize its report of the legal opinion, and it will submit it to the GST Council, which will meet later on this month on the issues of the rationalization of the taxes that have demanded 28% tax on casino, online gaming and horse trade, right? तो बात करें वेस्ट बंगाल फाइनेंस मिनिस्टर की, इट सेड दैट they are sticking on 28% of the rate and there's no question on restructuring how this valuation of mechanism has to be finalized. Now अगर बैकग्राउंड में चले, अगर पीछे आपको कुछ मीटिंग याद है, 47th GST काउंसिल की मीटिंग हुई थी. दिस वाज हेल्ड इन द मंथ ऑफ जून एंड आई हैव कैटेगोरिकली डिस्कस दिस न्यूज़. तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने यहाँ पे कहा था कि 28% की जो यूनिफॉर्म है वो हॉर्स रेसिंग, गेमिंग, कसिनोज पे होनी चाहिए. दिस इज यूनिफॉर्म रेट दैट दे वांटेड. एट प्रेजेंट अगर ऑनलाइन गेमिंग की बात करें, विदाउट बिटिंग इट अट्रैक्ट ओनली 18% ऑफ द GST एंड ऑल न्यू कैटेगरीज अट्रैक्ट्स अ हाई लेवी ऑफ 28%. तो इसीलिए इसके लिए भी 28% की डिमांड की गई है. अगेन विच इज क्रिएटिंग अ नॉट सिंक्रोनाइजेशन अमंग द मेंबर्स. तो उसमें भी अभी डाइवर्जेंट व्यू है, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स के लिए, खास करके गोवा जैसे स्टेट्स की बात करें, वो कभी इस चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे. Now moving to the editorial of the day, funding public education, something relevant for General Studies paper 3, that is government policies and intervention for the development of various sectors and issues arising from design and implementation. And this is also important for General Studies paper 2, right? जहाँ पे अगर बात करें, ये जनरल स्टडीज पेपर 2 की है, दिस इज नॉट फॉर 3, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर 2. और दूसरे टॉपिक की अगर बात करें, इश्यूज रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन में भी ये इंपॉर्टेंट है. Now, what is the theme of this editorial? So the theme of this editorial or article is funding public education. So I'll be simplifying this editorial into 4 important subheads. That is the national education policies version, need for public funding, consequences of privatizations and the way forward. So on the eve of the 75 years of India's independence, which it marked as a Amrit Mahotsav in India, the Union Minister for Education ने बात कही that the people should let go the idea of university must be funded only by the government. तो जो एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने ये बातें कही कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक यूनिवर्सिटीज़ को सिर्फ पब्लिक फंडिंग के थ्रू ही चलाया जा सके, और दूसरे ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है. और ये स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि आफ्टर इफेक्ट कही जा सकती है जनरल फाइनेंस रूल 2017 की, विच इनकरेज, ये जो रूल है ये इनकरेज करती है ऑल ऑटोनोमस बॉडीज टू मैक्सिमाइज द जनरलाइजेशन ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज एंड टू अटेन द सेल्फ सफिशिएंसी. बट ये एक ऐसी रिमार्क थी विच वॉज शॉकिंग, because this is contradictory to what the government vision is with regard to the national education policies. जहाँ पे एक तरफ सरकार तो ये कहती है कि हमें पब्लिक एजुकेशंस को उस बेसिस पे देखना है जो कि एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की तरह हो, बट एक तरफ मिनिस्टर का कहना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट फंडेड पे डिपेंड नहीं होने की ज़रूरत है और अपने लेवल पे ऑटोनोमस बॉडीज इंटरनल रिसोर्सेज को भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है. इससे खतरा ये, what are the challenges, what are the concerns? Because if universities are started charging student, it will definitely burden the student and the parents, right? Now, national education policies version की अगर बात करें, जो vision है actual में, so NEP envisioned that it would promote increased access, quality and inclusions through range of measures, including the greater opportunities for outstanding public education, right? It provided an assurance that the autonomy of the public institution will be blocked by an adequate public funding. तो ऐसा कहना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज की, और जो गवर्नमेंट की जो स्टैंड है, मिनिस्टर की जो स्टैंड है, वो कंप्लीटली इसकी अपोजिट है. नाउ अगर बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसीज की, द पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इन इंडिया इज नो वेरी क्लोज टू 6%, राइट? इट वॉज आर्ग्यूड बाय द वेरियस कमिटी दैट इंडिया में जो एजुकेशन है
6% होनी चाहिए कम से कम GDP की, वो अभी तक नहीं पहुंची है। एंड दिस वाज एनविजन इन 1968 पॉलिसीज इटसेल्फ, 86 में भी रिपीट की गई और 1992 में भी इस रिव्यू में बात की गई। सो इवन यू कैन हाईलाइट दिस पॉइंट इन मेंस, अगर आप मेंस में लिख रहे हैं तो अब ये पॉइंट को जरूर हाईलाइट करें। Against the backdrop, it was gratifying that 2020 policies endorsed a substantial increase in the public investment in the central and state universities, which can reach up to 6%. Now, need for public funding. अगर elaborate करें national education policies की, it said that the level of public funding was extremely critical for achieving the high quality and equitable पब्लिक एजुकेशन। तो हर एक लोगों के लिए एक्सेसिबल कराना एजुकेशन इंडिया में भी अपने आप में काफ़ी बड़ी चैलेंज है, बट गवर्नमेंट इज डूइंग द लेवल बेस्ट। वी नीड टू इंश्योर दैट द विजन इज ऑन द करेक्टनेस एंड ऑन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द आइडिया दैट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड, राइट। तो ट्रू ज़रूरी है कि जो फ्यूचर इकोनॉमी है, सोशल, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस है, उसके लिए गवर्नमेंट फिनेंशियली सपोर्ट करे। Now, going by the national education policies, National Education Commission, जिसको कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, it's a precursor to 1968 policies on the higher education. They should have get at least 2% of the GDP. Now, in contrast, the government expenditure on the education as a percentage of the revenue receipt has saw the decline 2.60 से घट करके ये 1.85 हुई है, जहाँ पे एंटिसिपेशन या टारगेट है 6% के आसपास, जो कि अभी तक मीट नहीं हुई। ना कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्राइवेटाइजेशंस की अगर बात करें, जब किसी प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या बर्डन हो सकते हैं एक बच्चों के ऊपर। सो हायर एजुकेशन इन इंडिया इज ऑलरेडी हाईली प्राइवेटाइज्ड, राइट। जो हायर एजुकेशन इन इंडिया में वो प्राइवेटाइज्ड है। मोस्ट ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर रन ऑन द सेल्फ फाइनेंशियल बेसिस। सो फी और जितने एक्स्ट्रा चीज़ है कुछ सब्सिडाइज नहीं होती है, सो दे टेक अ हाई अमाउंट ऑफ फीस। दस the resources of mobilization, internal revenue generations, cross subsidization resources, use efficiency, cost reductions और reductions, acceleration cost recovery, ये सारी चीज़ें होती है जो कि एक स्टूडेंट के ऊपर डायरेक्ट पड़ती है। Most obvious the consequences would be substantial increase in the fee and other charges, for maintenance charge, registration charge, development charge, personality development charges, and there are so many charges they are going to levy on a student, right? The idea of higher education should be funded fully by the student, on their parents, on the saving of the bank account borrowings, and grossly misplaced by an Indian context. तो इस तरह की चीज़ें कभी भी इंडिया को नहीं चाहिए। इवन वी आर नॉट अ डेवलप्ड इकोनॉमी, अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं ड्यू टू पॉसिटी ऑफ मनी द पीपल आर नॉट एक्चुअली एबल टू गेट द हायर एजुकेशन। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को एड करने की जरूरत है। कंपैरेटिवली अगर पिछले 5 सालों में देखें, जितनी रिसर्च के लिए फंडिंग आती थी पहले गवर्नमेंट की तरफ से, वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है, वो डिक्रीज हुई है, राइट। सो दिस इज द सीरियस कंसर्न दैट वी कैन टेक अ नोट ऑफ। द गवर्नमेंट नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट फॉर इन एजुकेशन। वे फॉरवर्ड की अगर बात करें, द NEP 2020 envisions an enrollment of higher education to be nearly doubled by 2035। जो विजन है उसमें डबल करने की बात की गई है ओवरऑल एनरोलमेंट की, राइट। बट दिस इज ओनली पॉसिबल once the fees and compensation is also given to student, right? Now, considering the fact that the social and economic elites, the rich and the affluent, have already crossed the enrollment ratio of 100%, but जो poor बच्चे हैं उनको enrollment में बढ़ाने की ज़रूरत है ज़्यादा। Now, higher education play a critical role in substantiating 2.8 trillion economy जो इंडिया आज बनी हुई है। Education has a better role and a huge role to play in making India 2.8 trillion economy at present। अगर बात करें फ्यूचर, जो इंडिया की विजन है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए, इसको भी पाने के लिए एजुकेशन एक बहुत बड़ी सेगमेंट है, जो कि अगर एक इंडिविजुअल अगर तैयार होता है, ही इज एजुकेटेड, ही इज वेल साउंड, ही इज डेफिनेटली गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन इकोनॉमी टू मेक द विजन ऑफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। इट इज इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ को, जो एजुकेशन है उसको प्रमोट करें, नहीं तो ये जो टारगेट है जो गवर्नमेंट ने सेट किए, कहीं ना कहीं हाई इनकम डेवलप्ड कंट्री कुड बी jeopardized। So ये कुछ ऐसे important points हैं which you can even write in the mains paper। Now moving to the MCQ questions of the day. Before I proceed, just to tell you the answers of yesterday questions. For first question, the correct option is C. For second question also the correct option is C. Today's MCQ for practice, आपको बताना है Bureau of Energy Efficiency के बारे में। It's a statutory body under the Ministry of Power which is set up in 2002 under the provisions of Energy in the Conservation Act 2001.
and it's mandated to policies to program on areas of efficiency and the conservation. So do check it out for the correct option. Second question of the day is with regards to Malabar exercise. It's an annual trilateral naval exercise between navies of India, Japan, and United States of America. And the exercise is held alternatively in the Indian Navy and Pacific Ocean. So do check it out for the correct option. This type of question is again important for your CAPF examination, right? इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं. So this was all about for the daily news and editorial analysis followed by the MCQ questions. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. Time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.